Welcome back, viewers. You're watching The Savera and I'm Shefali. 15 pilgrims lost their life and 2 women sustained serious injuries in a tragic road accident that took place near Phalodi in Rajasthan. The fatal collision occurred around 6:30 p.m. on the Brahmala Expressway at Matoda village in the Bipini subdivision. Officials later confirmed that 7 of the deceased belonged to the same family, and among the victims were 4 children, 10 women, and the driver of the vehicle. According to preliminary reports, the victims were travelling in a tempo traveller that was returning from Kolayat at Bikaner district, where they had gone to visit the ashram of Kapil Muni on the occasion of Devutani Ekadashi. The group, all resident of Sasurag in Jodhpur, was on their way to back when the vehicle reportedly attempted to overtake another vehicle and rammed into a stationary trawled park on the roadside. The impact was so powerful that the front section of the tempo traveller was completely crushed, trapping several passengers inside. Eyewitnesses said that the small roadside eateries have been set up along the stretch of the highway, and the trailer has been parked in front of one such eatery. The tempo traveller, moving at high speed, is believed to have lost control while overtaking another truck, resulting in the collision. Local residents and passing motorists rushed to the spot immediately after the crash and helped police team in rescuing the injured and retrieving the bodies. Officials described the rescue efforts as extremely challenging, as several bodies were jammed between the seats due to the force of the collision. Phalodi police station that the Amaran stated that the operation to remove the victims took several hours. Senior officers, including Jodhpur Police Commissioner Om Prakash Mathur and Superintendent Vikas Rajpurohit, visited the hospital to monitor the treatment of the injured. The 2 injured women were initially admitted to a hospital in Ocean and later shifted to Jodhpur through a green corridor for advanced medical care. Phalodi Superintendent of Police Kundan Kunwaria said that all the deceased were residents of the Phalodi area in Jodhpur district and had been returning home from their pilgrimage. The bodies were sent for post-mortem examination and were to be handed over to the families today morning. The accident sparked scenes of anguish at the hospital, where grieving relatives fainted upon seeing the bodies of their loved ones. Authorities continue rescue and relief operations late into the night, while efforts were made to formally identify all the victims and notify their families. Top political leaders, including President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma expressed deep sorrow over the tragedy. The Prime Minister's office announced an ex gratia of Rs 2 lakh each for the families of the deceased and Rs 50,000 for those injured. In a message shared on social media, the Prime Minister conveyed his condolences to the bereaved families and wishing a speedy recovery to the injured. President Murmu also described the incident as deeply distressing and offered her sympathies to the families who had lost their loved ones. Chief Minister Bhajan Lal Sharma termed the crash deeply tragic and heartbreaking and directed district officials to ensure the best possible medical treatment for the injured. Former Chief Minister and Congress leader Ashok Gehlot, who was in Patna at the time, also expressed his grief. In a post, he said he was deeply saddened by the news of the deaths and prayed for strength for the bereaved families and the speedy recovery for those injured. The devastating crash has left the Phalodi and Jodhpur region in mourning, highlighting once again the dangers of speeding and unsafe roadside parking on busy expressway. हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी को जल्दी से जल्दी वो उबरे, ऐसी कामना करते हैं। प्रशासन, हमारी पार्टी सब तत्परता से जो भी घायल हुए उनकी सेवा में तत्पर है। आगे भी ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत ही खराब दुर्घटना हुई है फलोदी गांव के मतोड़ा गांव के पास में, जो कोलायत से दर्शन करके महिलाओं की एक टेम्पो ट्रैवलर जोधपुर आ रही थी, जिसमें सूरसागर के हमारे नैनचीबा कटुकड़ी की विशेष तौर पर इसमें ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे, और जिसमें 21 में से करीब 15 से 18 ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई है और 2 महिलाएं घायल है जो एमडीएम में है।
हम प्रशासन से यही कहते हैं कि इनका जल्द से जल्द इनका पोस्टमार्टम करके इनका जो भी इनको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी है वो करें। और इस दुख की घड़ी में हमारी गहरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ है। ऐसी दुर्घटना होना बहुत ही दुखदायक है। परिवार की इस तकलीफ को हम समझ सकते हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी इनको सुविधा मिल सके वो मिले। धन्यवाद। अंदर लोग गए हैं, क्या नाम है, कौन कौन उनके परिजन मिसिंग है? सर ये मोतीलाल जी की फैमिली है, मोतीलाल जी सांकला नैन्सी का बाग खटुकड़ी बेरा पे। वहाँ पे उनके मोतीलाल जी की फैमिली में बड़े लड़के हैं। गणपत जी उनके बेटे की वाइफ गई है। सेकंड जो है ओम प्रकाश जी उनके वाइफ और उनका पोता। थर्ड जो है वो है राम सिंह जी उनके वाइफ। फोर्थ उनके बच्चे हैं गोविंद जी के वाइफ और उनके बेटे की वाइफ और उनकी बच्ची पोती है, जो मतलब गोविंद जी के पोती। अब 2 जने अभी, 1 जना घायल है, एमडी में हॉस्पिटल भर्ती है। अब 1 जना अभी पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है, कैसे। कितने सदस्य हो गए लगभग? या 8 सदस्य हो गए और उनमें से डेथ 6 बता। 7 तो कंफर्म हो गई। ठीक लग रही है ताराचंद गहलोत। आज की इस दुखद घटना में पूरे जोधपुर वासी बहुत ही गहरे शोक में हैं और ये जो दुखद घटना हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री जी शरण में स्थान दें एवं परिवार वालों का संबल बंधाए रखें। हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद, सभी प्रशासन और अस्पताल के प्रशासन व जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में है और उनके दिशा निर्देश उनको दे रहे हैं लगातार, ताकि कोई तरह की किसी की कोई कमी पेशी नहीं आए और घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि मातोड़ा में एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 15 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। ग्रीन कॉरिडोर बना करके 2 लोगों को यहाँ जोधपुर हॉस्पिटल लाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है, जिनके वाइटल्स नॉर्मल है और जैसी भी परिस्थिति होती है आपको ब्रीफ किया जाएगा। थैंक यू।